Page number 178. ये सोप जर्नल एंट्री के साथ में सिखाने वाला हूँ एक प्रॉब्लम को. Page number 178, question number 5. Have we solved that question? Page 178, question number 5. Okay. So let us solve this question. Given below is the balance sheet of Vaishali, Madhuri and Menaka, who were sharing profits and losses in the ratio of 3:3:3. So what is the profit sharing ratio? Can you tell me? They are equal partners. So we can also write it as 1:1:1, right? Balance sheet as on 31st March 2019, creditors, bank overdraft, general reserve, capital account of Vaishali, Madhuri and Mansi. Cash, debtors less RDD, furniture, machinery, motor car, profit and loss account. Vaishali retired on 1st April 2019 from the firm on the following terms. Furniture be valued at 14,000, machinery at 38,000 and motor car at 23,800. RDD to be maintained at 5% on debtors. Goodwill of the firm to be valued at 15,000. However, only Vaishali's share in it is to be raised in the books. A part payment of 10,000 to be made to Vaishali and the balance to be transferred to her loan account. Prepare profit and loss adjustment account, partners capital account, balance sheet of the new firm. यहाँ पे इतना बनाने को बोला, but also we will pass the journal entries for this question. Okay, तो पहले हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे अपने नॉर्मल मेथड से, देन आई विल टीच यू जर्नल एंट्रीज. 178 पे, पेज नंबर 178. Okay, so let us first open up the necessary ledger accounts. First we have opened up revaluation account. Then partners capital account, Vaishali, Madhuri, Manasi. कैश और बैंक अकाउंट, यहाँ पे कैश दिया तो we will write cash account. Balance sheet as on 1st April 2019. So now let us go ahead for first step. Transfer old balance sheet to new balance sheet. So we'll start with liabilities. Creditors will be transferred. $10,500.
bank overdraft, $5,000. General reserve will not be transferred. Capital account will go to capital account. Vaishali, 28,700. Madhuri, 31,800. Mari, 30,000. For liabilities have been transferred. We go to asset side. Cash will go to cash account, 19,500. Debtors, 16,000. उसमें लेस आरडीडी दिया है तो वर्किंग नोट पे जाएगा. ओल्ड आरडीडी इज 1,000. न्यू आरडीडी बाद में देंगे. But new old RDD is 2,000. Further, furniture, 15,000. Machinery, 40,000. Motor car, 25,000. Profit and loss is an accumulated profit. पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी एमबीए एंट्रेंस, SYJC कॉम, TYB कॉम और भी बहुत कुछ. चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट. कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें. और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान. इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक. तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी. Sorry, it is accumulated loss. We will discuss it later on. First step complete हो गया. Second step, distribute accumulated profit. It is there in the name called as general reserve. So capital account में जाएगा वो. By general reserve, the total amount for that is 12,000 and equal ratio 4,000, 4,000, 4,000. Distribute accumulated losses. It is there to P&L account. Total amount is 4,500. Equal partners, so 1,500 each. Is that okay up to this part? Next step, deal with adjustments. Deal with adjustments. Vaishali retired on 1st April 2019 from the firm on the following terms.
फर्नीचर वैल्यूड एट 14,000। तो फर्नीचर का नया वैल्यू है 14,000, पुराना वैल्यू था 15,000 लेस रिवैल्यूएशन 1,000। रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू फर्नीचर 1,000। फिर बोला है मशीनरी एट 38,000। तो मशीनरी का नया वैल्यू है 38,000, पुराना वैल्यू था 40,000। तो लेस रिवैल्यूएशन 2,000। एसेट का वैल्यू कम हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू मशीनरी 2,000। मोटर कार एट 23,800। सो मोटर कार का नया वैल्यू है 23,800। इसमें भी लेस रिवैल्यूएशन 1,200। एसेट का वैल्यू कम हो गया रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में टू मोटर कार 1,200। Digit number 1. Nobody is answering मतलब कोई डाउट नहीं है, ऐसे assumption पे जाता हूं मैं। Next, RDD maintained at 5% on debtors. हम बैलेंस RDD अमाउंट कितना आएगा, मुझको मैथ्स नहीं आता, अमाउंट बताओ। ये एडजस्टमेंट का इफेक्ट पहले आप लोग दो, यू 1 मिनट फॉर दैट। कितना आ गया अमाउंट आपको आरडीडी का? RDD, new RDD is 800. So outer column 15, 200. Abhi, new RDD is 800. Less old RDD is 2,000. So RDD has become negative 1,200। और आप सबको पता है RDD जब नेगेटिव हो जाता है, RDD जब नेगेटिव हो जाता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा बाय RDD 1,200। Any doubt? Adjustment number 2 is over. Goodwill of the firm is valued at 15,000. पूरे फर्म का गुडविल 15,000 है। However, only Vaishali's share in it is to be raised. तो हम सिर्फ वैशाली का शेयर रेस कर रहे हैं। ओके, तो वैशाली का शेयर कितना रहेगा मुझको बताओ। उसमें
दे आर इक्वल पार्टनर्स, तो वैशाली का शेयर। अभी इस गुडविल को हमने रेस किया, इस गुडविल को हमने रेस किया, तो जर्नल एंट्री क्या आता है? गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू वैशाली's कैपिटल अकाउंट। तो इसका फर्स्ट इफेक्ट गुडविल के डेबिट साइड में इग्नोर करेंगे, दूसरा इफेक्ट कैपिटल के क्रेडिट साइड में बाय गुडविल। तो वैशाली के कॉलम में 5000, माधुरी एंड मानसी के कॉलम में 0। एनी डाउट? एंड गुडविल को राइट ऑफ नहीं किया है, तो रूल क्या बोलता है? गुडविल शैल बी शोन सेपरेटली ऑन एसेट साइड। गुडविल 5000। ओके, अभी वो एडजस्टमेंट भी कंप्लीट हो गया। अ पार्ट पेमेंट ऑफ 10,000 टू बी मेड टू वैशाली, तो वैशाली को हमने पार्ट पेमेंट किया, तो वैशाली इज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। 10,000 और दूसरा इफेक्ट कैश के क्रेडिट साइड में बाय वैशाली कैपिटल 10,000। अभी बैलेंस टू बी ट्रांसफर टू लोन अकाउंट, तो वो लोन में जितना आएगा लास्ट में उतना ट्रांसफर करेंगे। इज दैट ओके? अभी हम लोग अकाउंट क्लोजिंग के लिए जाएंगे। सबसे पहले रिवैल्यूएशन क्लोज होगा। डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है 4,200, so there is loss of 3,000 rupees which will be distributed among the partners by capital account.